This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 श्री नकुल के नाथ। Question number 61 by Shri Nakul Kamal Nath. Will the Minister of Finance be pleased to state A. The collection of the Goods and Services Tax GST from the state of Madhya Pradesh during each of the last 4 years. B. The amount of the GST compensation released by the government to the state of Madhya Pradesh during the same period. C. The amount of GST compensation due to the government of Madhya Pradesh from the central government. And D. Whether the GST Council intends to consider the demand of the state government of Madhya Pradesh to increase the GST compensation for an additional 5 years, and if so, the details thereof. Shri Pankaj Chaudhary, Minister of State for Finance. माननीय मंत्री जी विवरण सभा पटल पर रख दीजिए। माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज। स्पीकर सर, आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, 4 बिंदु हैं, मैं एक साथ पढ़ सकता हूँ? नहीं, आप प्रश्न पूछ लें, सप्लीमेंट्री भी मिलेगी आपको एक, उसके बाद। स्पीकर सर, आपके माध्यम से विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस be pleased to state the collection of GST from the state of Madhya Pradesh during each of the last 4 years, the amount of GST compensation released by the government to the state of Madhya Pradesh during the same period. आप ऑनरेबल मेंबर इससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लें जो आप पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक बार प्रयास है, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, आपको मौका देंगे। The amount of GST compensation due to the government of Madhya Pradesh from the central government, and whether the GST Council intends to consider the demand of the state government of Madhya Pradesh to increase the GST compensation for an additional 5 years, and if so, the details thereof. Thank you. अध्यक्ष जी, वैसे तो विवरण सभा पटल पर रख दी गई है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सवाल है, 4 साल का डाटा भी उनको दे दिया गया है, और जीएसटी जहां तक 5 साल बढ़ाने का सवाल है, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद के कानून द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर जीएसटी एक्ट लागू होने के कारण राज्यों को राजस्व हानि के लिए 5 साल तक कंपनसेशन प्रदान करेगी। इस मुआवजे का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? नो। श्री बी मेहताब जी। The last question of the question number 61 has not been answered or has been deliberately, it has been done. My question is in 2 parts, sir. One is relating to GST compensation that is due to Odisha relating to 2021-22 and 22-23. I would say an amount of 3,251.53 crore for the year 21-22 and 22-23 is yet to be released in favor of Odisha towards GST compensation for the loss of revenue on account of implementation of GST. I would like to understand from the Honorable Finance Minister whether she is going to ensure payment of the balance GST compensation, as has been already decided in the Council that within every 2 months the money has to be released, which is yet to be released, though it was supposed to be released in the month of April. And I also like to understand, after completion of 5 years as per the constitutional provision, whether government is going to increase that providing compensation, which has been over by last June. Thank you. Thank you for giving me the permission to answer while the MOS was
doing the responses. So in particular about the dues for Orissa, as of June, the provisional figure for Orissa is 528.95 crores, which is pending compensation. So the larger issue of the compensation pending, will we be giving it, I think has periodically been explained that for 5 years we were, since after the introduction, for 5 years the compensation was expected to be provided, which we are committed and we have been continuously doing. And if I were to put it in some kind of a, how much is pending, if I were to go by month, nearly the last month was June, till when the compensation had to be given. And of the June amount, nearly half of it is already paid. For the rest half, we're waiting for adequate collection to happen because it has to be given from the compensation cess collected, which goes into a public account from where they get given. So for June, that compensation which has to be paid, half of it has already been released and no more amount was available for me to release the rest half. But otherwise, there's nothing that is pending for me to give in the sense of all that has been collected has been disbursed. But the GST compensation has already been extended till 26 to pay for the loans which were taken back to back being provided to the states in 2020 when the collections were not at all there. And that has to be repaid only from the cess payment because it's a loan taken to pay compensation cess. And in order to pay for that repayment, that is, for that loan taken and for the interest, therefore, to service it, the extension for the period of 5 years, but for the borrowed amount, it has been extended till 26 already. The other explanation which may apply to some states and which may not apply to some other states is if states have not sent us the Accountant General approved statements of this is it, the state has to get this much of compensation, has to be authorized by the respective state's Accountant General, AGs. If there is a delay in the AG's certified claims from the state, obviously that will be still pending. So if the AG certificate comes along with a claim from the state, that moment that money will also get released. So I want to say from our side, we are up to date. As regards as much money that is there for me to distribute, we have distributed. And we are up to date again for all the claims which have come from states approved by their respective AGs, we've paid. And if AGs have not cleared or it's pending, I would request state governments to kindly expedite that. I'm willing to clear it the moment I get it. आप कहाँ बोल खड़े होके पूछो आप बैठे बैठे खड़े होके Thank you very much, Mr. Speaker. That's gracious of you. The Finance Minister has made an interesting statement because we heard last week from Kerala Finance Minister that Kerala is yet to receive 4,466.89 crores as goods and services tax compensation since the 2017-18 fiscal year. And they claim that according to their audited calculations, there's a shortfall in 5 of the last 6 years. Except, I gather, for 1 year, last year, 1920 fiscal, when you actually paid a bit of an excess. The rest, according to their calculations, has fallen short. I gather the Finance Minister came to see you. Would you clarify for us and for the House what the exact position is with regard to the GST compensation for Kerala? Sir, again, as of June, for Kerala, it is 780.49 crores only. 780.4916, if you want fourth decimal as well. Yes, the Kerala Finance Minister met me. He has given me some details of the claims. So these are, I would like to believe, if the state believes that that is pending,
I also would like to believe it's pending because I need the necessary papers to clear it. The moment, sir, Honorable Speaker, the papers reach me of that certification which is required, even if there is a contention between the center and state, it has to be sorted out. Until then, it's pending from both sides. I can't be sitting on somebody's money if all the papers which is so required is before me. It's impossible. But of course, if there is a dispute, after all, I'm dealing with taxpayers' money, I need to have a legitimate way of sorting it out with the AG, with the finance minister, with the officials of the state, as much as all of us here. No. Sir, these are, of course, the officials who will be engaging on it, sir. And therefore, is there a difference? Is there no difference? The fact that it is pending for this long, yes, there is a difference, but they are sortable difference. Question number 62, Sri Sumedanand Saraswati ji. Question number 62 by Shri Sumedanand Saraswati, Shri Balaknath. Will the Minister of Finance be pleased to state A. Whether any criteria has been set by the government for the various public sector banks PSBs for spending funds under the Corporate Social Responsibility CSR in the country, including Rajasthan? B. If so, the details thereof. C. Whether all the PSBs are adhering to the provisions for the CSR spending. D. If so, the details of funds allocated and the work undertaken under the CSR during each of the last 3 years and the current year, bank and state-wise, including Rajasthan. E. Whether any step has been taken by the government for monitoring the funds spent under the CSR in Rajasthan, and if so, the details thereof, district-wise, including Sikar, Alwar, Karauli, Dholpur and Bharatpur districts. And F. The steps being taken by the government for ensuring CSR compliance. Dr. Bhagwat Kishan Rao Karad, Minister of State for Finance. माननीय सदस्य मैंने सुन लिया, उनको बोल भी दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने सीएसआर से संबंधित एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा था, काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकारी बैंक पर कंपनी अधिनियम 213 लागू नहीं होता है, इसलिए इन पर सामान्य सीएसआर लागू नहीं होता। मैं अब यह जानना चाहता हूं, क्या सीएसआर निजी बैंकों के लिए लागू है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि पिछले 3 वर्षों में इनके द्वारा राजस्थान में खर्च की गई है? यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से निजी बैंक को सीएसआर लागू हो सकता है और बहुत सारे बैंक्स हैं जिसका चार्ट मेरे पास है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पिछले 3 साल में जो सीएसआर हुआ है, जो एचडीएफसी सबसे बड़ी बैंक है, उसमें टोटल 1906 रुपए का सीएसआर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक में 602 तो और में दे दिया। आप तो बताओ राजस्थान में जो खर्च हुआ है सर, जो सीएसआर जो एक्सपेंस होता है वो नेशनल पॉलिसी पे होता है। कुछ ऐसी चीज है जिसमें स्वच्छ भारत कोष है, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड है। सो ऑल ओवर बैंक्स आर इन द नेशन, और जो कुछ प्रॉफिट या सीएसआर होता है तो पूरे देश में खर्चा होता है, तो राजस्थान या कोई स्टेट के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं। ओके, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर, दूसरा मेरा ये निवेदन था कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों में सीकर सहित राजस्थान में कितनी धनराशि सरकारी कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत खर्च की गई? दे दिया ना माननीय मंत्री जी ने जवाब कि हम देश में सोचते हैं, राज्यों के बारे में सूचना नहीं है। मैं सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूं, बैंकों से। पहला प्रश्न बैंकों से संबंधित था मेरा प्रश्न पहले बैंकों से संबंधित था। अब कंपनियों के अंदर भी ये मॉडल लागू है जो बैंक के अंदर। मंत्री जी जवाब दो, अलग से मॉडल थोड़ी बन जाएगा। सर, ये तो सेम मॉडल इज अप्लाइड फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आल्सो। और ये बैंकों, आप तो बताओ कि बैंकों के और दूसरी कंपनियों में अलग अलग है क्या मॉडल? ऐसा नहीं। एक माननीय मंत्री जवाब देंगे। Just for the sake of clarity, sir, corporate social responsibility is a part of the Companies Act, and every institution which is registered as a company will come under corporate social responsibility. Whereas
banks are registered under the Bank Nationalization Act. They are not companies. So when we expect banks to spend CSR, they spend according to the rules which are as per guidelines given by the RBI. Strictly the Companies Act, CSR, the RBI guidelines and the CSR guidelines under the Companies Act largely align with one another, but they are different because banks are under the Banking Nationalization Act and the companies otherwise are under the Companies Act. So if you go detail by detail per the CSR under the Companies Act, may not exactly fit into this, but banks, particularly the public sector banks, because they are under the Banking Nationalization Act, follow the RBI guideline as regards corporate social responsibility. So in principle, I just want to make this laid in front of the honorable members so that we know the difference between. बालकनाथ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या भविष्य में जो कंपनियां जिस स्थान पर हैं जहां पर उन कंपनियों का उद्योग लगा है, तो क्या उस क्षेत्र के अंदर जो उसकी तहसील है या जिला है, तो उससे द्वारा जनरेट सीएसआर कुछ उस क्षेत्र के अंदर मैंडेटरी हो लगाना कुछ परसेंटेज, क्या ऐसी योजना मंत्रालय की है भविष्य के लिए? जिस क्षेत्र में कंपनी है उसी क्षेत्र में खर्च करना है, कोई रुकावट नहीं है। अभी भी कंपनी उनके अपने जहां प्रेजेंस है वहां नहीं एक मिनट, मैंडेटरी नहीं है मगर बोर्ड का निर्णय, सर इट्स अ प्रोसेस विच इज लार्जली ड्रिवन बाय द कंपनीज बोर्ड। बोर्ड एक सब कमेटी जैसे एक कमेटी सीएसआर के लिए रखती है, उसके द्वारा निर्णय होते हैं कि कहां कौन सा स्कीम के लिए खर्च उठाना है। अगर उसी इलाके में उसी तालुक में करना है तो बोर्ड निर्णय कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन सरकार के द्वारा उसको मैंडेटरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं है। करना उचित है कि नहीं है वो भी सोचने लायक है, क्योंकि कंपनी के अंदर कितना सरकारी इंटरफियरेंस हो सकता है वो भी चर्चा के लायक विषय। ऑनरेबल मेंबर डी रवि कुमार। Finance Minister, the NLC, Neyveli Lignite Corporation Company, which is working in Tamil Nadu, Neyveli, but they are spending their CSR not only in Tamil Nadu, but also other states. Particularly during COVID, they have spent money more than Tamil Nadu, they have spent in Karnataka and other states. Is there any specific guideline to restrict the spending of CSR in the particular state where the company is working, where the industry is working? Sir, the answer given to the earlier question will be applicable. There is nothing which restricts anybody. At the same time, nothing which tells them you have to do it this way or that way, because the company's board takes the call. गोपाल शेट्टी जी। महोदय जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वो जो नियम बने हैं उसके मुताबिक दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इस सभागृह नियम में बदलाव करने के लिए है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सीएसआर फंड का जो अमाउंट है उसमें से 1% गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसमें जाए, बाकी के 1% उस राज्य में खर्चा किया जिस प्रकार की एक मांग है। और अध्यक्ष महोदय जी, आपको भी पता होगा कि शुरुआत में जब प्रधानमंत्री ने योजना लागू की तो वो भाग के एमपीज को बुलाकर जहां सीएसआर फंड का काम होता है वहां पर बुलाया जाता था और फोटो निकाला जाता था। मैंने पूछा कि भाई छोटे काम में हमको क्यों बुलाते हैं, तो बोले नहीं हमको फोटो भेजना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में वो सारा बंद हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सम्मान जो गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए कोई नियम में आने वाले दिनों में बदलाव करेंगे क्या? सुझाव है सर। क्वेश्चन नंबर 63, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Question number 63 by Srimati Sarmishtha Sethi, Shri Guman Singh Damor. Will the Minister of Education be pleased to state A. The total number of central tribal universities in the country along with the number of tribal students studying therein state-wise. B. Whether the government has any proposal to set up tribal universities in the country including Odisha, and if so, the details thereof. C. Whether the Union government has received any proposal from the state governments in this regard, and if so,
the details thereof, and the action taken thereon. D. The standards prescribed to open Central Tribal University. E. The names of the subjects being taught in the tribal universities, university-wise. And F. Whether the facility of pursuing PhD is available in these tribal universities, and if so, the details of subjects being offered for study in PhD, university-wise. Dr. Subhash Sarkar, Minister of State, Education. माननीय मंत्री जी, Answer of this statement is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, during the COVID and post-COVID, many children, including a lot of tribal children who were pursuing higher education, dropped out. We all know the reasons: family loss, financial loss, etc. My question is whether the ministry has taken any step to bring back those children to the universities, any financial assistance or any other kind of support provided to them, any data regarding how many dropped out children returned to the universities. Honorable Speaker, sir, our member has raised a good question, but I am giving the answer that according to the data in the ministry, in higher education, gradually GER is increasing day by day. Starting from 2012-13, it was 11.1 and now it is 18. So naturally, it is a continuous process always to take the dropout children to the higher education, and that's why we have also built in the 2019 another tribal university in Andhra Pradesh. Order supplementary. Sir, a central university has been set up in tribal-dominated Koraput district, but from viewpoint of infrastructure and manpower, the university seems to be on a neglected front. My question to the Honorable Minister is, what is the total number of vacancies in the teaching and non-teaching positions in the Central University in Koraput, in my state, that is Odisha, and when these positions will be filled up? Honorable Speaker, sir, the question is on the tribal university, and Koraput is not the tribal university. We have the detailed data on tribal university. If member comes and meet with me, I will tell him. सारे कुछ चीजों को सारी तो है ही पूरी कंप्लीट यस सर माननीय मंत्री जी देंगे जवाब ऑनरेबल स्पीकर साहब सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश कर आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है ये बात सही है लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं इन दिनों में वहां एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है एक साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज एनआईटीज की भी है इंजीनियर गुमान सिंह डामोर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उत्तर दिया है और मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में पहली बार शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं जैसे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल इस प्रकार से जो व्यवस्था की जा रही है इससे जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का गुणवत्ता युक्त शिक्षा का स्तर बढ़ेगा मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक है ये 75 कोर्सेज चला रही हैं परंतु इन कोर्सेज का पूरा लाभ जनजाति क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो क्या जनजाति बाहुल्य जिले में इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत
आने वाले जितने जिले हैं उसमें स्टडी सेंटर खोले जाएंगे ताकि जनजाति क्षेत्र को इसका पूरा लाभ मिले। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो हमारी जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी के जो मिशन है, उसको विजन, वो सारे जो ट्राइबल बच्चे को अच्छे से उनको एक्सेस हो और उनको क्वालिटी एजुकेशन हो, इसके कारण ये बना है। और उनके साथ साथ वहाँ के जो ट्राइबल आर्ट, कल्चर, मेडिसिन, इसके बारे में सारी चर्चा हो, इसके कारण ये बना है। और इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और गांव के बच्चे भी वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये सारी पढ़ाई होता है। और इसके साथ साथ जब जब जरूरत हो तो उसी समय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को, जो मध्य प्रदेश को जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस भी खुला जाता है। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर टी.आर. पारीवंतर। Honorable Speaker, sir, Tamil Nadu has 7.21 lakh tribal population as per 2011 census. To promote higher education and to preserve the culture and tradition of the tribal communities, whether the Ministry of Education has any plan to start Central Tribal University in the state of Tamil Nadu, particularly in Vachamalai tribal area in my Perambalur constituency. If so, the details thereof. Thank you. Honorable Speaker, sir, I would like to inform honorable member through you that our government is very much dedicated to the development of tribal populations in all round, even in the education also. That's why we know, with the visionary leader of our Honorable Prime Minister, India has made a tribal teacher, lady teacher, to our Mahamahim Rashtrapati. All over the world it is being praised. And setting up of a central university is also a continuous process and is set up as and when need arises. And at present, there is no proposal from any state. देखने वाले बात है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सर्विस की है, एक बार उनको नाम तो कीजिए, शुरू किसने की थी? अजीब सी बात है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। आपकी जवाब में देखो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सीमांचल से आता हूं, जहां सबसे डिप्राइव्ड एरिया है एजुकेशनली भी, और इसको देखते हुए मैम यूपीए की गवर्नमेंट ने वहां पे एक शाखा दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास रखा था 2014 में जनवरी में सर, और उससे कबल 136 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था उन्होंने, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ दिया गया सर। आप जानते ही, आपने मेरी पैरवी भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से। उसके बाद कई मरतबा एएमयू सेंटर के लिए फंड मांगा गया। लास्ट 24 मार्च 22 को 354 करोड़ मांगा गया सर, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ साथ 2021 सितंबर में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग एंड 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिया गया, और जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार सर जितनी लीडरशिप है बीजेपी के पिछले कुछ महीनों से पासमानदा मुस्लिम्स की बात करती है। हमारा पूरा सीमांचल सर पासमानदा है। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे, और ये जो 354 करोड़ एएमयू किशनगंज के लिए मिलना था वो कब तक देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मंत्री जी नहीं हो भाई, मंत्री जी। झूठ बोल रहे हैं। I can club. आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने भी कई बार कहा है और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी
कई बार उठाते हैं। मुर्शिदाबाद भी है, आप एलओपी हो, या कीजिएगा, मुर्शिदाबाद भी है, शुरू में मुर्शिदाबाद में प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैं आपको जिक्र कर रही थी कि जावेद भाई अब मेरा जो मैं प्लीज मैडम देख लिया, मैडम देख लिया, बैठो। आपको दिखाना चाहते हैं। आप बड़े आदमी हो, सवाल एक आप ऑनरेबल मेंबर प्लीज, मंत्री जी, माननीय मंत्री सदन जी। की वरिष्ठ सदस्य हो, आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम ये दो जगह पे एएमयू की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज की कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है जिसके कारण हम चाहते हुए भी, हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे, इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। असत्यवाद की बात आप करते हैं, असत्यवाद क्या होता है सर? 2010 यूपीए सरकार, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, आप साचार कमेटी रिपोर्ट, इनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आप जवाब दे दीजिए। साचार कमेटी रिपोर्ट आपको चेयर ने परमिशन नहीं दिया। अधूरा सपना का है, सत्य नहीं का बात करते हैं, असत्य अधूरा सपना का, अधूरा सपना, सत्य नहीं बोले, नहीं, मैं असत्य बोला। जिन्होंने भी संतोष बाबू, जिन्होंने भी 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 श्री हेमंत तुकाराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 64। Question number 64 by Shri Hemant Tukaram Godse, Shri Sunil Baburao Mendhe. Will the Minister of Skill Development and Entrepreneurship be pleased to state: A. The number of individuals certified under recognition of prior learning (RPL) till date under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), and the number of trained individuals who have got employment, placement after such certification, state-wise, including district sector-wise in Maharashtra. B. The details of the recent pilot project organized in collaboration with Gram Panchayats and the Department of Panchayati Raj in Maharashtra. C. Whether this model can be successfully replicated in other parts of the country, allowing more individuals to locally attain certification for prior acquired skills, and if so, the details thereof. And D. The role of the private sector and corporate social responsibility (CSR) to promote skill development and details of other major initiatives taken in this regard. Shri Rajiv Chandrasekhar, Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship. माननीय मंत्री जी। Sir, statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir. In skill development sector, compared to urban area, the number of RPL is quite low in rural area, which affects the rural economy and also
migration from the rural to urban area. For example, in rural area, if any candidate gets trained in mobile repair sector or any other sector, he would start his business, and indirectly the effect goes to rural economy and will help to stop the migration. So Speaker sir, through you I want to ask Honorable Minister whether government is planning for upgrading the skills of workers in urbanized sectors at Gram Panchayat level, which will improve rural economy and stop migrations. Honorable Speaker sir, the member has asked an important question, but I would like to respond a little comprehensively. Sir, the RPL is part of the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana. It is part of our short-term training program. And the RPL has been made necessary, sir, because when our government came into effect in 2014, the government had to inherit a large pool of unskilled workforce in the informal sector. The numbers were estimated to be in 2014-15 to be over 30 crore in our workforce that were unskilled. This is the legacy that this government had to deal with. And in addition, sir, 1.6 crores of age 15 and above were joining the workforce as unskilled every year. In that process, we have over the years skilled over 1.4 crore in the short-term programs, of which 54 lakhs have been in the RPL. It is true, and I take into account the suggestion made by the honourable member that we must increase RPL programs and RPL coverage in the rural areas. Supplementary. Speaker sir, the main objective of Pradhan Mantri Kaushal Kendra was the government will support these centers till they self-sustain. And after that, they will develop this sector, the skill development sector. But after long time, it has been seen that whether they had achieved the target, because there are near about 700 PMKK centers. So through you, I want to ask Honorable Minister, after long time support of the government to this PMKK centers, achieving their goal compared to other training providers, or government is planning to give direct support to the private local training providers so that the skill development sector will grow fast. Sir, ये बात सही है कि हमारे 700 PMKKs हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है पिछले सालों में, लेकिन सर कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ था हमारे स्किलिंग एक्टिविटीज़ में, और PMKKs के जो एक्टिविटीज़ है उनके काफ़ी डिसरप्शन हुए हैं. हम आगे इनका एक तरह से एक रिवाइव करने की कोशिश में हैं और एक नया प्रोग्राम मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके आपके सुझाव को जरूर हम मन में रखेंगे सर. सुनील बाबूराव मेढे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपके जवाब के लिए. सर, मेरा एक पहला पूरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोगों ने 2014-15 से राष्ट्रीय विकास निगम के माध्यम से अभी तक के 1.46 करोड़ लोगों को हमने रोजगार देने के लिए काम किया है. सरकार ने कभी ये सोचा है कि ये जिन लोगों को हमने अभी तक के कौशल विकास के माध्यम से जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनका बाद में अभी के हाल में क्या उनका कुछ अपने सर्वेक्षण करके कुछ अंक प्राप्त किए हैं कि अभी उन लोगों की क्या हाल है और उन्होंने अभी उनके जीवन मान में क्या विशेष सुधारणा हुई है, इसके बारे में कुछ हमने सर्वेक्षण किया है, इसके बारे में मुझे जानकारी दे. और सर, दूसरा विषय साथ ही में पूछ लेता हूं कि हम लोग अभी, क्योंकि हमने जो भी एनसीडीसी के माध्यम से काम किया है, पता चलता है कि जो 4-6 महीने वो लोग काम करते हैं और बाद में फिर वापस आ जाते हैं. तो हम लोग कुछ ना माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से ही वहाँ से भी कोर्स चालू करके इन लोगों को स्पेशली एनएसडीसी की जरूरत न पड़े, ऐसा कुछ प्रावधान करने का या सिलेबस लाने का कुछ सोच रहे हैं क्या? सर, माननीय सांसद ने सर्वे के बारे में या इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा है, और कोविड से पहले हम ये हमारा एक रेगुलर प्रक्रिया होता था सर, और कोविड के दौरान जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे डिसरप्शन हुए हैं. हम अभी ये वापस शुरू करने की प्रयास में हैं सर, इम्पैक्ट असेसमेंट. दूसरा जो सुझाव उन्होंने कहा है कि
हम प्लेसमेंट और जरा सर्वे करें स्टूडेंट्स के, ये अच्छा सुझाव है, हम इसको ध्यान में रखेंगे सर। सुश्री राम्या हरिदास। Thank you, sir. Whether the government plan to conduct special job fair or Rozgar Mela this year for the youth in state, especially in Kerala under PM-KVY? If so, details, sir. Thank you. Sir, the basic question pertains to RPL, and this issue is outside the scope of the question. But may I respond that the government is actively conducting Prime Minister Rozgar Melas and Pradhan Mantri Apprentice Melas, and uska information public domain mein hai. Question number 65, Shri A.R. Reddy. Question number 65 by Shri Anumula Revant Reddy. Will the Minister of Finance be pleased to state A. Whether the government has taken note of the fact that the Indian currency is weakening day by day and has hit rupees 83 per US dollar for the first time ever, and if so, the details thereof and the reasons therefore. B. Whether the Reserve Bank of India RBI has been using forex reserves to stem the fall in the Indian currency, and if so, the details thereof. C. Whether the RBI has sold US dollars between rupees 78.97 and rupees 78.98 per US dollar and significantly increased its foreign exchange reserves to prevent the rapid devaluation of the rupee, and if so, the details thereof and the reasons therefore. D. The details of the measures taken by the RBI to bolster the forex inflows while ensuring overall macroeconomic and financial stability during each of the last 3 years. And E. Whether the government has taken any steps to stem the rupee's slide against the dollar, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Srimati Nirmala Sitharaman, Minister, Finance. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। स्पीकर सर, हम सब पता है और फाइनेंस मिनिस्टर ट्रू फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश की है फाइनेंस मिनिस्टर. आई वांट टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपये था, तब नरेंद्र मोदी जी. प्रश्न पूछिए सर 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 वो यही प्रश्न है सर. हाँ, वही प्रश्न. मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस. आप तो आपका प्रश्न पूछिए. सर सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी. पूछिए प्रश्न का. प्लीज सर. रुपया आईसीयू में पड़ा है. देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है. आपका प्रश्न है क्या? सर सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर. आप किसी प्रश्न स्पीकर सर आप इंटरप्शन मत कर सकते सर. बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए. प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज. एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है. समझ गए ना आज के बाद? मेरे पास अधिकार है. नो, कभी नहीं होगा ऐसा. सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं. आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे. हिंदी थोड़ा कमजोरी है. ना 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 आप मुझे मौका दो. आपका मौका मांग रहे हैं सर. हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले. मौका मांग रहे हैं सर. मौका मांगने का समय ऑन रिकॉर्ड है. मौका मतलब बोले. हाँ पूछो, आप, आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूँ. स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूँ, मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पूरी रक्षा करें. क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए.
जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा, मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में, सॉरी, आप बेटे बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना, ये तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर। सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका। उनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। प्लीज सप्लीमेंट्री। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपने प्रश्न पूछा गया? ठीक है सर, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा। वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर 2014 अपना लोन्स का है सर
55,87,149 crore सर। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बारोइंग किए 18,744 crore। तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे सब लोग मिलकर 55 लाख करोड़ बारोइंग किए। तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 80 लाख प्लस करोड़ बारोइंग किए। हर साल 10 लाख करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा है। इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया ये सरकार। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर ये सरकार से, अगर रुपए ताकत करना है तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखना है। इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है? पिछले 12 साल में जितना इन्वेस्टमेंट्स आया था हिंदुस्तान में 2022 5 महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट कर लेके वापस चला गया। ये सरकार के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भरोसा चले गया, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी भरोसा चले गया। इसीलिए मैं ये पूछना सर, this question started with हाँ ले लिया। ये फैसला मुझे करना है, आपको नहीं करना। Sir, this question, the main question was on currency devaluation and foreign exchange reserves. Currency devaluation itself, sir, the word devaluation, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ सर। Devaluation itself is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. आज भारत में fixed exchange rate mechanism नहीं है. If anything, why did you accept this question? माने सर प्लीज। सर, ये क्या प्रॉब्लम है आप लोग? आप Sir, the question is given by the Secretariat. We are answering it. Accepting or not accepting is not a choice of the Mantri. Questions come, we are duty bound to answer. And in answering that, I'm explaining it, sir, if you permit me. Devaluation is when it is in the fixed exchange rate mechanism. If any rate is coming down or going up, we are now talking about depreciation and appreciation. Devaluation itself is not in this context. One. Second, I have explained very clearly that the currency, particularly Indian rupee versus dollar, is because I've said this and I know it has become a good fodder for all those who want to play around in the social media creating memes. Oh, Indian, like the way people make fun of me because I don't eat onions. I do take care of onion eating people, but still that is, you know, that's all that they can contribute to the debate. Sir, my answer cannot, आप guide करेंगे sir मुझे जब my answer is not right. When yes, many things are not relevant which are being raised, but I will answer. You can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. Now, each one of us can always prefer one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isiliye, at this time, to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down,
or FDIs, people are running away, no investor wants. That's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. So a bit more data. Of course, data is available in my answer, and more is available in the public domain. Isliye honorable member should please, sir, therefore, kind of interference with honorable leader of the opposition, sir, I would appeal to you. आप तो बोलिए आपका जवाब. मेरा गला भी, you know, it's my vocal cords are tearing by the level of his guttural powers, sir. I can't match up the vocal powers of the opposition. आप पूरा जवाब दें. जवाब दे दिया सर. हो गया. एक बात सुनिए, एक मिनट प्लीज बैठिए. एक मिनट बैठिए, मैंने सर प्लीज एक मिनट बैठिए, सब बैठिए. बैठिए, आपको नहीं. माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं. ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं. ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं. देश की जनता चुनकर आती है. कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी. रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं. प्लीज बैठिए और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे. प्लीज बैठिए. माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको. सुन लीजिए, वैसे नहीं चलेगा सदन तरीके से चलेगा पूरा. माननीय सदस्य, आप प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया. बैठिए आप. माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको, ये समझाइए, तरीका ठीक नहीं है. क्या जवाब देना है? आपसे मंत्री जी गाइड नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर 66. Question number 66 by Shri Sangana Amarappa, Dr. Umesh G. Jadhav. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state A. The implementation mechanism for the ban on single-use plastics notified in the Plastic Waste Management Rules 2021. B. The details of the proposed expansion of the identified plastic items under the ban. C. Whether the government has found that many manufacturers continue to produce plastic items like straws, straw covers, cigarette packets, etc., and such items are also available in small shops. D. If so, the details of the action taken against them. And E. Whether the government has penalized any persons, companies for deviation from the said rules so far, and if so, the details thereof. Shri Bhupendra Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change. Srimati Mahua Moitra. Thank you, sir. With your permission, I'd just like to ask the Honourable Minister that on the use of single-use plastic, we have already got the Plastic Waste Management Rules 2021. But those of us who come from rural areas, representing rural areas, we find that this ban has not really been implemented, and this is still a problem. What I'm asking is, what is the alternate mechanism we are using? Because still today, for most vendors, single-use plastic remains the cheapest form. So are we developing jute or cloth or anything at the same price point that people can actually pick up? Because if you are bringing a law in and not giving an alternative, that's why people are not accepting the alternative. So what is the other biodegradable options that the government is trying to promote? Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल यूज प्लास्टिक पे जब हम लोगों ने बैन लगाया था तो हम लोगों ने विभिन्न व्यवसायी लोगों का, छोटे उद्योग वालों का पूरा सेमिनार करके हमने अल्टरनेटिव बताए थे. जिस प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक में ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स और प्लास्टिक स्टिक्स, बैलून, फ्लैग्स, उसका जो अल्टरनेटिव है हमने पेपर क्लॉथ के फ्लैग्स, बॉम्बो कॉटन ईयरबड्स, उनको हम लोगों ने किया है. ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कटलरीज और बाकी के जो स्पून्स वगैरह हैं
वो भी हमने लकड़ी के दिए। और इसलिए अगर आजकल आप विमान में भी जब यात्रा करते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो विकल्प के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा और इनसे निश्चित रूप से लघु और कुटीर उद्योगों को लाभ मिला है। इसके साथ ही साथ मंत्रालय इस बात पे भी काम कर रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन भी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। और हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक में जो जिन चीज़ों को बंद किया है उसके अतिरिक्त जो छोटी प्लास्टिक की जो थैली आती है वो 75 माइक्रो तक हम लोगों ने 30 सितंबर तक करी और अब दिसंबर के बाद 125 की जो माइक्रो वो जो उसकी लेंथ की जो प्लास्टिक की थैली वो भी बंद होगी। मैं सदस्यों से भी ये कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा कार्य है जिसमें सबको सहयोग देना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो वैकल्पिक हमारे कुटीर और लघु उद्योग जो हैं उनको इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मंत्रालय से अगर इस संबंध में आपको कोई जानकारी सहायता चाहिए तो हम हमेशा आपकी सहायता के लिए भी उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के सुब्बा नारायण। Question number 67 by Shri Subbarayan K. Will the Minister of Finance be pleased to state A. The details of amount written off in respect of non-performing assets NPAs of banks between the years 2019 to 2022, account and bank-wise, and B. The percentage of education loans to the total NPAs. Srimati Nirmala Sitharaman, Minister, Finance. Honorable member supplementary. Speaker, sir, I would like to raise my supplementary question in Tamil. Sir, only union government பல்வேறு பெருநிறுவனங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை ரத்து செய்திருக்கிறது, ரைட் ஆஃப் செய்திருக்கிறது. ஆனால் வெறும் 0.82% மட்டும் இருக்கக்கூடிய படிப்பு ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக லோன் வாங்கியவர்கள் 0.82% என்று இருக்கிற நிலையில் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு சலுகை காட்டுவதில் அக்கறை செலுத்துகிற ஒன்றிய அரசு ஏன் ஏழை எளிய உயர் படிப்பு படிக்க சொந்தத்தில் பண வசதி இல்லாதவர்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கிய நிலையில் அதற்கு அவர்கள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்கள். எனவே என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி, ஒன்றிய அரசு இந்தியாவில் உயர்கல்விக்காக லோன் வாங்கியுள்ள கடன்களை ரத்து செய்ய முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन लोन और Tamil sir, if you permit me. பெரிய கம்பெனிகளுக்கு இங்க ரத்து பண்ண செய்யல லோன். Sir, பொய் is an unparliamentary word. Whoever used it, will you please remove it? பெரிய கம்பெனிகளுக்கு ரத்து செய்யல. ரைட் ஆஃப் என்பது வேற, ரத்து செய்வது என்பது வேற. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இங்க யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் செய்யலைங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, ரைட் ஆஃப் என்பிஏ இருந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் அவங்க பேங்க்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆதார பத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நாங்கள் பேசிஸை வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை திரும்பி பேங்க்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஒன்று. ரெண்டாவது, எஜுகேஷன் லோன் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒன்று. ஆனா இவங்க பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்த மாதிரி ஒரு விதமான நோக்கத்துடன் உள்நோக்கத்துடன் பேசுறது சரியானது கிடையாதுன்னு உங்ககிட்ட ரொம்ப தாழ்மையுடன் முன்வைக்க விரும்புறேன். மூணாவது, அவர் எஜுகேஷன் லோனுக்கு இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஒரு சஜஷன் அவனை சொல்லாமே தவிர, இன்னைக்கு எஜுகேஷன் லோன்ல கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு பெரிய கம்பெனிக்கு நாங்க கொடுக்கறதா சொல்றது ஒரு உள்நோக்கத்தோட பேசக்கூடிய ஒரு கேள்வி. சார், நான் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரன்னிங் காமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் தயவு பண்ணி அதை நிறுத்தணும். நாங்க அதனால யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் பண்ணல. ரைட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அவங்க பணத்தை நாங்க முழுமையா நாங்க எங்க மேல நஷ்டமா எடுத்துட்டு மாதிரி சொல்றது தப்பு. प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.